यू सो क्यूट, यू सो गोलू मोलू। इंडिया में बच्चों को ये सारे कॉमन टाइटल्स तो बहुत दिए जाते हैं एंड उनके गाल खींचना इज सुपर फन, बट इज इट रियली गुड फॉर देयर हेल्थ एंड वेल-बीइंग? Data shows that in the last 35 years, obesity in children has more than doubled. According to the recent statistics by Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, around 5 to 8.8% of school children are obese in India. And if we continue at this pace, around 27 million children in India will be obese by 2030. And what's obesity, you may ask? Obesity is when you have a BMI of over 30. इसका मतलब अगर आपका 8 साल का बच्चा 4 फुट का है और 50 किलो का है, then his BMI is 30 and sorry to say he is obese. While you think कि ये उम्र में तो ये ठीक ही है, अब नहीं खाएगा तो कब खाएगा, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, then you are unaware of the consequences and the risks that your child may have with obesity. अगर आपका बच्चा obese है, उसको कई तरह के physical and mental issues आ सकते हैं. Physical issues में diabetes, dyslipidemia, cholesterol, asthma and लड़कियों में PCOS जैसी बीमारियां हो सकती है. Mental issues में आपका बच्चा can face depression, low self-esteem, anxiety, etc. एंड टेंशन की बात यह है कि these problems may not even show up in their childhood. They may carry obesity into their adulthood and then these problems can happen. And guess what? Data shows that more than 50% of the obese children grow into obese adults. मतलब आपका गोलू बड़ा होके भी गोलू ही रहेगा. So let's see हम चुन्नी आंटी को गुड पेरेंट से सुपर पेरेंट कैसे बनाते हैं और गोलू का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. नंबर 1, ये जरा ऑब्वियस सा है. स्टॉप और लिमिट ऑल प्रोसेस्ड फूड्स एंड ऐड होल फूड्स. इसका मतलब है कि जब गोलू पिज्जा, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बर्गर्स की जिद करे, देन डू नॉट एंटरटेन इट. Keep a strong heart. And also, we are not only talking about what Golu orders from outside. We are also talking about घर पे बने हुए unhealthy snacks like deep fried समोसे, वड़े, भजिए या फिर high sugar Indian sweets जो घर पे बनते हैं. Just because ये सब घर पे बना है, it does not make it healthy. And for your kids and also for you. It is very easy to stay in the false belief that अभी तो उसकी उम्र है, but diseases and health issues उम्र देख के नहीं आते. What is bad for the human body is bad for the human body. And we have spoken at length on how to make your घर का खाना perfect in this video. In short, their meals should have minimally processed foods like fruits, different kinds of vegetables, good quality protein like paneer, dahi, milk, tofu, eggs or chicken, good carbs like roti, rice, quinoa, oats, muesli, bajra, jowar and good fats like nuts, olive oil, avocado and ghee. Number 2, add more protein to their diet. While this may be shocking to you, but kids actually need more protein per kilogram of body weight than an adult does. अब बच्चे खेलने, कूदने, अपना होमवर्क स्किप करने के अलावा क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं. And guess what helps the body grow and develop? Protein. While adults need 0.8 grams per kilogram of protein per day in their body, kids need 1 gram per kilogram. And another magical thing that protein does is it keeps you satisfied and keeps your hunger away. मतलब आपकी cravings और आपकी overeating बंद हो जाएगी. Coming to point number 3, stop force feeding them. While these things are said with the best intentions at heart, this may not always be the right thing to say. Especially अगर आपका बच्चा overweight या obese हो. अब गोलू के मोटे होने का नंबर 1 रीजन ये भी है कि वो अपने natural fullness and hunger signals खो बैठा है. Which means that even when he is full, his brain is telling him that he is still hungry. And अगर आप ये सिचुएशन में उसको फोर्स फीडिंग कराते हो तो you're only making it worse. Let them stop when they think they are done. This is how they will rebuild the satiety and the hunger signals back. And this skill is called appetite awareness, a skill that is very important for them to learn early on. 4th,
एक्सरसाइज इज फॉर किड्स टू। एक बच्चा जिसका BMI नॉर्मल रेंज में है, उसके लिए स्कूल का हफ्ते में एक बार का PT क्लास और एक स्पोर्ट काफी होगा। बट आर गोलू को गोलू से पतलू बनाना may need an extra push. An excellent habit to develop at early ages is to have him do 45 to 60 minutes of workouts every day. And नहीं, खाली running या swimming नहीं, body weight exercises or exercises with weights under proper guidance is highly recommended. And the most important, be a role model. Kids don't do what they are told to do. They do what they see others are doing. So the most important point in the whole video is आगे के 4 पॉइंट्स वापस एक बार देख लो और यही पॉइंट्स को खुद अप्लाई करो। आप अपने बच्चों को दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर के हेल्दी मील्स एंड दुनिया भर की डांट दे सकते हो, बट इफ दे डोंट सी यू डू व्हाट यू आर टीचिंग देम, दे विल नेवर डू इट। सो यस, लविंग योर किड्स इज डेफिनेटली उनके गाल खींचना, उनको पैम्पर करना, उनके साथ जॉयफुल मेमोरीज शेयर करना, बट लविंग देम ऑल्सो मीन्स making certain tough decisions and giving them some tough love so that they can benefit in the long run.